इस कोविड के एक्सपीरियंस में जो हम सर्वाइव कर गए, हैव वी ओपन्ड आवर आइज to be better human beings, and what are we going to do to prevent it further? नई रिसर्च ये भी कह रही है कि नया वेरिएंट है, 5 साल के बाद ज़्यादा virulent आएगा। मेरी नज़र में तो 5 साल से बहुत पहले आएगा। So we need to do certain things to prevent rather than doing things on ad hoc basis. One message very, very clearly is that vaccine is the way forward. No two things about it. ये जो confusion है कि vaccine लगाएं नहीं लगाएं, safe है कि नहीं, time tested है कि नहीं, what options do we have? Do we have another option or a choice? No. So vaccine is the way forward. Vaccination or screening, ये दो चीज़ें scientifically, if you see, will only make a difference if they are done to the masses, to the population. ठीक है? Masses, population, not a selective group. अगर selective group कहेगा कि मैंने वैक्सीन लगा ली है और मेरे इर्द गिर्द 10,000 लोगों को नहीं लगी हुई, a variant, virulent variant of virus, a resistant virus will develop, which will attack them. That will attack me in spite of having the vaccine. I think there's such a fine line that when it was me and my husband both, we both had COVID. You are so helpless. You realize that with the whole backup, that I would say that I'm one of the privileged ones who owns a private hospital, who had everything possible on God's earth available for me. मेरे लिए वेंटिलेटर भी था, ये भी था, एक्सपर्टीज़ भी थी, सब कुछ था. But the disease itself, the virus itself is so deadly that there was no difference between me and any other patient who couldn't afford anything. So उसमें एक आपकी outlook to life really changes कि what is life about? There's a fine line, 2 सांस हैं या नहीं है, you're 6 feet under the ground. So we really have to become better human beings. मैं कहूँगी कि मेरे और मुमताज़ पे ये एक impact आया that अल्लाह ने हमें क्यों ज़िंदा रखा है. We have to do more for the people. That's the best charity, that's the best service that you can give. ये और दूसरा कि having more feelings for the people who have COVID. We really need to sit down public-private partnership rather than giving us hospitals कि ये ले लो और single line budget है और उसके साथ जो मर्जी करो. Quality. एक benchmark we have to define कि what is the care that we have to give to our citizens? Do we have to treat them like dogs or human beings? Are they equal when they are बीमार? Do they have a right to health care or not? That is the single question. अगर दिल में वो feeling है तो स्ट्रक्चर है कि हर चीज़ की कॉस्ट इस्टेब्लिश करें. ठीक है कि ये चीज़ एक नॉर्मल डिलीवरी की कॉस्ट ये है, बेंचमार्क. फॉर द मैसेस देयर हैज़ टू बी अ क्वालिटी डिफाइंड. वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बैठे और हर चीज़ की एक कॉस्ट लगाए, एक ऑडिट का मैकेनिज़्म हो, स्टाफिंग का मैकेनिज़्म हो, जिस पे हम रीडिफाइन करें अपनी हेल्थ केयर और प्रोवाइड करें. अब रहता है ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग. अगर मैं हस्पताल रन कर रही हूँ और मुझे गवर्नमेंट कहती है कि सादिया, दिस इज़ अ बाइंडिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years दैट इफ़ यू हैव 200 bedded hospital, you have to train our staff that we will pay for, जो हमारे सैलरी पे है, to a better level, to train 6 महीने आपके हर अच्छी नर्स के साथ काम कराना और उनको ट्रेन करना मैंडेटरी. आई विल डू इट gladly. It is not us versus them. It is not के हुकूमत वालों का मुल्क है. मुल्क हमारा भी है, टैक्स हम भी पे करते हैं, हम यहाँ रहते हैं. मुल्क सबका बराबर है. We all have to work together towards nation building. So ये us, you and us ख़त्म कर दें और लेके बैठ के पॉलिसी बनाएं.
हेल्थ में बहुत ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर को साथ लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कभी अकेले नहीं बना सकेगी। गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि क्या है, हम क्यों सक्सेसफुली बिजनेस रन करें। सिमिलरली इन एजुकेशन, why are the private models successful? Why are they delivering good quality? LUM से लें costs of education, Beacon House से लें, City School से लें. We need to do the costing, we need to do an audit, we need to clean our system and give policies, procedures. और ये costing कभी भी हुकूमत अकेले नहीं कर सकती unless they take the private sector in confidence और हम इकट्ठे काम करें. One thing is extremely important, that we need to choose our battles. We can't open 50 fronts and succeed in 50 directions. In my opinion, we need to invest majorly in human resource training. Be it nurses, be it technicians, be it doctors, be it engineers, biomedical, agriculture. We need to invest majorly in human resource training. That is one thing that we need to address ASAP. Because जो हमारी biggest weakness is our population, कि हम इतनी heavily populated country हैं. We can flip it like China by training our human resource and use it as our strength. Change our weakness into our strength is human resource training. अगर हमारा हर individual trained होगा, तो हमारी तकदीर चेंज हो जाएगी. मेरी होप सिर्फ तब होगी if we learn to appoint the right person for the right job on merit. Right person for the right job. If we continue with nepotism, hearsay, no research, scandals upon scandals upon scandals, and appointing the wrong people for wrong reasons, we will never recover.